कॉम्प्लेक्स नंबर में, और कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने कुछ प्रॉब्लम्स की थी पिछले बार, कुछ पहले पॉइंट्स, उसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम। अब कुछ और पॉइंट्स लिखवा रहे हैं। नाउ जो ये पॉइंट्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू straight line, this is related to coordinate geometry, but they will be a part of our coordinate geometry, that is coordinate geometry in terms of complex number. अब हम जो पॉइंट्स करने जा रहे हैं, this is a coordinate geometry in terms of a complex number. It is points, remember. पॉइंट्स रिमेंबर में फर्स्ट पॉइंट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसके ऊपर वैसे हमने क्वेश्चन पहले ही कर लिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस A Z1, B Z2, C it comes out to be Z3 is equilateral. Triangle ABC will be, it comes out to be equilateral. This is ABC. A is given by area of triangle with vertices. This is given by, this is area equal to, this is equal to half. जैसे हमने पहले किया था, it is half. It comes out to be, this is, we take it Z1 as x1 plus iota y1, Z2 is x2 plus iota y2, Z3 is x3 plus iota y3. I can take it, it is x1 y1, x2 y2, x3 y3, it is 1 1 1. Area of triangle will be like this way. Then it comes out to be, or it can be written as area of triangle is equal to 1 by 2 into, it is x1, it comes to, I can write down z1, it is z1, conjugate of z1, it is 1, z2, conjugate of z2, it is 1, it comes out to be z3, this is conjugate of z3 into 1, this is area of triangle. Then it comes out to be, इसमें जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो इट विल बिकम 1/4, ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। नाउ इसी पॉइंट का अगला पॉइंट बन रहा है, पॉइंट नंबर 2 करके लिख रहा हूं, कंडीशन फॉर ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल, ट्रायंगल टू बी इक्विलेटरल इज क्या आएगा, इट इज 1/z2 माइनस z3 प्लस 1/z3 माइनस z1, it is z2 minus z3, z3 minus z1 plus 1/z1 minus z2 is equal to 0. Or if we take the LCM, we got it z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to, this is equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3. This is condition for triangle to be equilateral, or I can say it is 1 1 1 and then it is z2 z3, then it comes out to be z3 z1, this is z1 z2, this is equal to be 0. So these are the important conditions for triangle to be what, equilateral. These both conditions will be used in for equilateral triangle. Point number 3.
equation of straight line. Equation of straight line A, Z1, B, Z2 is Z conjugate of Z1, Z, Z1 conjugate 1, Z2, Z2 conjugate 1, this is equal to 0. So this is a way of forming a equation in form of complex number. Instead of real coordinates, we have been given the complex coordinate in Argand plane. We find out the equation of straight line in this way. Then it comes out to be next. इसको सिंप्लीफाई करके और वी कैन से इट इज z1 minus z2 conjugate minus conjugate of z into z1 minus z2 plus z1 conjugate z2 conjugate minus z2 z1 is equal to 0. This is point number 3. Then it comes out to be point number 4, that is length of perpendicular. Length of perpendicular from a point on a line. जैसे let line मैं suppose कर लेता हूं that I take it is conjugate of a z plus a conjugate of z plus b is equal to 0. I take a and I take it a complex number w, this is equal to p. So I can say let line is conjugate of a z plus a into conjugate of z plus b is equal to 0, and a w is the point. Am, I can say this is am is perpendicular, p perpendicular. Am is the perpendicular distance. Then am is equal to p is equal to, क्या हम जैसे पहले करते थे, हम यहां पर z की जगह क्या करते करेंगे, वी सब्स्टिट्यूट इट इज w. जैसे हम पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, z की जगह ये पॉइंट पुट कर देते थे, ये कोऑर्डिनेट पुट कर देते थे, अब भी ऐसे ही करना है. a conjugate will remain as such. z की जगह आ गया w, we put it modulus plus a as such. conjugate of z की जगह आ जाएगा, it is conjugate of w plus b, a real quantity. b here is real upon, it comes out to be, it is 2 into modulus of a. It is 2 into modulus of a. This is we say this is the length of perpendicular if point A represent a complex number. The next point is it is diameter form of circle. Diameter form of circle. Diameter form of circle का क्या मतलब होता है, हमें जब n points given हो, we can say it is a, it is z1, b, it is z2, and this is point P, locus of point we take it z, it is like this. So diameter of point is, it comes out to be z minus z1, z minus z1 into, it comes out to be conjugate of z minus z2 plus z minus z1 conjugate
z minus z2 is equal to 0. This is a way, this is a diameter form of equation of circle. जो जनरल सर्कल है, we have done it. जनरल सर्कल is, it is z. ऑलरेडी मैंने आज भी लिखवाया है, पहले भी लिखवाया था. It is a conjugate of z plus conjugate of a into z plus beta is equal to 0. Beta belongs to real. This represents general equation of circle. Then next point आता है, I'll say this is next point, this is next point, and this is now the next point is equation of circle. Equation of circle passing through, equation of circle passing through 2 points A z1 and b z2 is z minus z1 conjugate of z minus z2 conjugate plus conjugate of z minus z1 into z minus z2 plus k time, it comes out to be z, it is conjugate of z1 z1 conjugate of z11 z2 conjugate of z21 is equal to 0, where k is a parameter, where k is a parameter. Then it comes out to be, next point is equation of circle. Next point is equation of circle. Equation of circle through 3 points A z1 B z2 C z3 is. Now equation of circle passing through 3 non-collinear points, that is equal to z minus z3 upon z minus z1 into z2 minus z1 upon z2 minus z3. This is equal to conjugate of z1 minus conjugate of z3 upon conjugate of z1 minus conjugate of z1 into, it comes out to be z2 minus z1 conjugate upon z2 conjugate minus z3 conjugate. Whatever written over on the left hand side, यहाँ पर right hand side पे उसका क्या लिख लेंगे? Conjugate. This is equation of circle through 3 points. Next, if 4 points z1 z2 z3 z4 are concyclic, then z1 minus z2 upon z1 minus z4 into z3 minus z4 over z3 minus z2 is purely real. These are the points, relation between complex number and coordinate geometry forming equations of straight line and circle. Now the problems.
Now I'm taking first problem of this lecture is question number 43. It is problem number 43. This is like this. Question is lambda is given as r. The next thing it has been given out. If origin and non-real roots, we have been given non-real roots. If origin and non-real roots of 2z square plus 2z plus lambda is equal to 0 form three vertices of an equilateral triangle. Form three vertices of an equilateral triangle in Argand plane. Then lambda is, this is plane, then lambda is A option. We have been given out 1, B 2 by 3, C. This is 2 and D option is minus. So one thing is we एक तो पॉइंट हमें ओरिजिन गिवन है, तो सबसे पहले I just take it this equation 2z square plus 2z plus lambda is equal to 0. So I try to find out the z. Z in quadratic, z is equal to minus 2 plus minus 4 minus 8 lambda upon 4. Z is equal to minus 1 plus minus 1 minus 2 lambda upon 2. Now we have been given this, these are non-real roots, that means discriminant will be less than 0, 1 minus 2 lambda less than 0, or 1 is less than 2 lambda, lambda will be greater than 1 by 2. So first condition we got it, the value of lambda will be greater than 1 by 2. So this minus 1 rejected. This is minus 1, D option is rejected. अब हमारा हमने देखना है कि वो क्या आएंगी वैल्यूज, इट कम्स आउट टू बी. अब हम ले लेते हैं ए कोऑर्डिनेट्स. ए कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा? ए कोऑर्डिनेट्स विल बी, इट कम्स आउट टू बी, I can say minus 1 by 2. This is minus 1 by 2 plus square root of, it is 2 lambda minus 1, 2 lambda minus 1 upon eta upon 2. This is eta. This is B minus 1 by 2. B point is minus 1 by 2. It comes out to be minus 2 lambda minus 1 upon 2 into eta. Now I can say A and B are representing this one. Clearly, O we have been given at 0, 0. We have been given, this is what? This is equilateral triangle, so I can say OA is equal to AB is equal to OB. This is equal to OA is equal to OB. First of all, I just take it one by one. I take it OA is equal to OB. उस केस में क्या आएगा? It comes out to be OA distance, that is equal to 1 by 4 plus 2 lambda the whole square by 4. That is equal to OA square, this is equal to 1 by 4 plus 2 lambda minus 1 the whole square. It will come out to be same. OA is equal to OB, को फर्क नहीं पड़ेगा. This OA is equal to AB. तो I just take it, OB की जगह क्या लेता हूँ? AB. AB will be equal to what? It comes out to be 0. This is minus half 0 plus 2 lambda minus 1. It is 2 times
2 lambda minus 1 upon 2 the whole square. This is equal to OA. This is equal to what? I can say it is 1 plus 4 lambda square plus 1 minus 4 lambda upon 4. Squaring साथ में कर दें. This it comes out to be, this is 4 lambda square. It comes out to be, इसको स्केयर करेंगे तो it is 2 lambda minus 1. स्केयरिंग कर देंगे 4 lambda square plus 1 minus 4 lambda. This will be cancelling out with this one. Then it comes out to be, यहाँ पर क्या आ जाएगा? It comes out to be 4 lambda square. It becomes lambda, it should be greater than half. On solving, we got it. Lambda is equal to 2 by 3. So the right option is B part. So simple logic is origin, non-real roots. We find out Z1, we find out Z2, we just solve it. OA is equal to AB is equal to OB. So OA is equal to AB solve करके we can find out lambda की दो वैल्यूज आएंगी, एक greater than half लेनी है, that is 2 by 3 will be the right option. Now I am coming to next problem. The next problem is question number 54. Question number 54. The question is, if z the power 5 is equal to z minus 1 the power 5, then roots are represented in Argand plane. Roots are represented in Argand plane by points are A part, they are collinear, B part concyclic, C vertices of parallelogram, D none of these. So इसको करने का वे आउट क्या है? यहां पर देखो क्या फॉर्म लगेगी. We have been given z the power 5 is equal to z minus 1 the power 5. This term will come over here. It becomes z the power 5 upon z minus 1 the power 5 is equal to 1. अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I can say one thing. It is z, or I can say, because this will be ideal thing will be, इसकी जगह हम लिख लेते हैं 1 is equal to z minus 1 over z the power 5, or I can say z minus 1 over z is equal to 1 the power 1 by 5. That means fifth root of unity. फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी है. सो यहां पर क्या करेंगे? इट इज, इसको किस फॉर्म में चेंज कर देंगे? आर्गुमेंट फॉर्म में. इसको हमने पहले भी किया हुआ है. 1 विल बी इक्वल टू सिस ऑफ 0 1 by 5. दिस इज z माइनस 1 over z. अब क्या करेंगे हम? डिनोमिनेटर अंदर लाने के लिए डी मॉरिस थ्योरम फॉर फॉर एन बी ए रैशनल क्या लगेगी? उसमें पहले हम क्या टर्म एडअप करेंगे? 0 plus 2k pi. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में this 5 will come inside. This is 5. This is z minus 1 upon z, where
k is equal to 0, 1, 2, 3, 4, where k is equal to 0, 1, 2, 3, 4. So I can say this is z minus 1 upon z is equal to, this is equal to cis 2 pi n upon 5, n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. In all, for all z, for all z, we find, for all n, we find out modulus of cis 2 pi n upon 5 is equal to 1. That means modulus of z minus 1 upon z is equal to 1. This is modulus of z minus 1 is equal to modulus of z. ये क्या बन जाता है? It becomes, this is, ये मैंने करवाया हुआ आपको, this is equation of perpendicular bisector. This is equation of perpendicular bisector. This is the equation of perpendicular bisector of line joining A 1 plus 0 iota and B 0 plus 0 iota. What does it mean? It means points lie in the same straight line, or I can say points are collinear. It means, say, I can say points are collinear. So the right option is, it comes out to be A part, it is collinear. करने का way out, I change into argument form, I find out the modulus of these all comes out to be 1. So it becomes this equation. यहाँ से we can conclude, क्या conclude कर सकते हैं? Z minus 1 modulus is equal to Z. This is the equation of straight line joining A 1 plus 0 iota and B 0 plus 0 iota. Now the next problem is, fifth question. 55th. The region of Argand plane. The region of Argand plane defined by z minus iota modulus plus z plus iota less than equal to 4 is A part interior of ellipse, interior of an ellipse, B exterior of circle, C interior and boundary of an ellipse, D it is none of these. So ये पॉइंट मैंने लिखवाया हुआ है, पॉइंट में हमने क्या किया हुआ है, वी हैव डन इट, इट इज z माइनस आइटा मॉडुलस z प्लस आइटा मॉडुलस is less than equal to, this distance is less than equal to what, it is equal to, पॉइंट जो बन जाएंगे it comes out to be 0, 1 and 0, minus 1. So this is equal to 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें क्या आ जाएंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा, इट इज, इसको जब सॉल्व भी करेंगे we'll get it, it is x minus 1 the whole, it is x square
plus y minus 1 the whole square root plus x plus y plus 1 the whole square root लेस देन इक्वल टू 4. सो डायरेक्ट जो था हमने फार्मूला लिखवाया हुआ है, क्या लिखवाया हुआ है, z1 माइनस z2, z माइनस z2 प्लस z माइनस z1 इज इक्वल टू 2a. is 2a represent ellipse, less than equal to 2a it represent interior of ellipse, less than equal to में क्या आएगा, ये आ जाएगा it represent, this represent interior and boundary of, this represent interior and boundary of an ellipse. So the right option is C part. Now the next question is, it is question number 59. Question number 59 is equation of straight line joining complex numbers a and iota b. a और b हमें दे रखे हैं, a b are real. तो क्या बनेगी, we know that this is equal to, equation of straight line is z, z1 conjugate 1, z1 conjugate z2 conjugate mod 1. This is equal to 0. यहां पर z1 हो गया, that is equal to a, z2 क्या हो गया, it is equal to iota b. So z1 conjugate will be a, z2 conjugate is minus b iota. a यहाँ पे रियल नंबर है, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, सेम. z2 यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा b, उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, माइनस b आयोटा. सो आई कैन से इक्वेशन विल बी इक्वल टू व्हाट, इक्वेशन विल बी z conjugate of z, it is 1. यहाँ पे आएगा a, this is a, this is 1. Then it comes out to be iota b, this is minus iota b, this is equal to 1. Now we expand it, we got it what, this is equal to 0. We got it z into a plus iota b, this is z into a plus iota b, minus conjugate of z, this is equal to a minus iota b, minus, it comes out to be minus a iota b, minus a iota b minus a iota b minus 2a iota b is equal to 0. Now looking upon the four options, we can say it is what, it is z, that is equal to z, it terms will come over here, इस टर्म को राइट हैंड साइड ले जाओ एंड इट कम्स ओवर हियर, इट इज 1 ओवर a माइनस आइटा अपॉन b. जब इसको राइट हैंड साइड ले जाके डिवाइड करेंगे तो वी गॉट इट व्हाट, इट इज z अपॉन 1 अपॉन a माइनस आइटा अपॉन b, इट इज प्लस z कॉन्जुगेट, this is equal to 1 over a plus iota b, this is equal to 2. So the right options we have been given, जो right options हमारे पास है, that is the a option is z 1 over a minus iota upon b plus conjugate of z 1 upon a plus iota upon b. This is a option. B, z a minus iota b plus conjugate of z a plus iota b is equal to 2a square plus b square. C option, we have been given z a plus iota b plus conjugate of z into a minus iota b
is equal to 2AB, D none. So the right option it satisfies is A. So A is the right option of, so question number 59 का the right option है A part. वी आर कंटिन्यूइंग विद द कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आज का टॉपिक है वो है रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. Or we can say angle between two lines joining, two angle between two lines represented by complex numbers. So दो लाइंस के बीच में एंगल, और जो दो लाइंस पे क्या दे रखा है, इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उनके बीच में एंगल इन फॉर्म ऑफ आर्गुमेंट प्लेन कैसे निकालेंगे. तो सबसे पहले है, इट कम्स आउट टू बी, इट इज रोटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आई टेक दिस इज आर्गन प्लेन, this is argon plane. I take it one number, I can say this is one z naught, this is z1, this is z naught, this is z1. Now what angle it make it with this one, with I can say this is whatever I say, I take it, this is this is O, this is A, this is B, this is O, this is A, this is B. अब इसके बीच में एंगल कैसे बन रहा है और हाउ वी डिनोट इट. बेसिकली वो लाइन रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाती है, डेट इज कॉल्ड आर्गुमेंट. अब इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, आई जस्ट टेक इट थीटा. तो z1 माइनस z नॉट, z1 माइनस z नॉट, this is parallel to our real axis. We say it is z1 minus z naught is equal to, this is equal to z1 minus z naught, it is cos theta, this is equal to z1 minus z naught is equal to z1 minus z naught modulus into cos into cis theta, it is equal to cis theta, z1 minus z naught is equal to cis theta. So what I'll take it, I take it first of all, I take it z1 minus z2, let z1 minus z naught modulus is equal to r. I take it this is as r, then I can say z1 minus z naught is equal to r cis theta. Now this is AB. Now AB is rotated. Now AB is rotated about A z naught through an angle phi. Through an angle phi. Through an angle phi in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction, such that AB is equal to AC. I take it this vector as C. I take it as C. यहाँ पे B पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर था, I can say B पे था Z1. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरा आ जाएगा. It will come out to be, I take it Z2. Because position have been changed. This is an anti-clockwise direction. It is phi. Then it comes out to be AC.
This is equal to what? I can say this is AB. Now it comes out to be it is Z2 minus Z2. यहाँ से मैं यहाँ लिख सकता हूँ Z2 minus Z naught is equal to Z2 minus Z naught. It is equal to Z2 minus Z naught into e the power iota theta plus phi. एज मेरे को पता है दिस इज थ्री थीटा और ये रियल एक्सिस के साथ विच इज पैरेलल टू दिस वन रियल एक्सिस उसके साथ क्या एंगल बना रहा है इट कैन कम आउट टू बी थीटा प्लस फाइव दिस होल एंगल इज थीटा प्लस फाइव Z2 minus Z naught is equal to R as AB distance is equal to AC distance. So I can say Z2 minus Z naught is equal to this is equal to R. Now e the power iota theta into e the power iota phi. What does it means? It means I can say Z2 minus Z naught is equal to this is equal to R. R की वैल्यू I can say this is R e the power iota theta. वो हमने क्या पे लिया था यहाँ पे that is equal to Z1 minus Z naught. तो यहां से मैं लिख सकता हूं Z1 minus Z naught it is e the power iota phi. This is the result we got it. और यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं मैं यहां से कंक्लूड कर रहा हूं I am concluding from here it is Z1 minus Z naught upon it is sorry Z2 minus Z naught upon Z1 minus Z naught is equal to e the power iota phi. I can say this is the angle between two points B and C represented by vectors. इस पॉइंट को एक बार फिर समझ लो अब दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है तो वो कैसा निकालेंगे हम क्या करेंगे वी कोई ऐसे दे रखा हो इट इज दिस Z2 माइनस Z नॉट अपॉन Z1 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू ई दी पावर आइटा फाई. इस बात का ध्यान रखना हम एंगल मेजर अप करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और यहां से जो रिजल्ट आ रहा है ध्यान से देखो इट कम्स आउट टू बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. सो हमने डायरेक्शन देखनी है ऊपर कौन सा रखना है हमने ऊपर इस वजह से रखना है इट शुड गो इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बट एंगल इज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने कैसे किया इस पॉइंट को एक बार समझ लो वी गॉट इट Z1 माइनस Z नॉट हमने R ले लिया तो यहां से Z1 माइनस Z नॉट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किसमें आर्गुमेंट फॉर्म में सिस फॉर्म में क्या चेंज करेंगे इट इज Z1 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R सिस थीटा. इट कैन बी रिटन एज R e the power iota theta. Now this is one thing. Now AB is rotated. This AB is rotated about A where complex number Z naught lies through an angle. This AP is rotated through AC. Then it in anti-clockwise direction such that AB is equal to AC. तो मैंने यहाँ पे क्या प्रूव किया Z2 माइनस Z नॉट किसके इक्वल आएगा ये होल एंगल किसके इक्वल बना रहा है इट कम्स आउट टू बी Z2 माइनस Z नॉट e द पावर आइटा थीटा प्लस फाइव. नाउ Z2 माइनस Z नॉट इज इक्वल टू व्हाट R. ये हमने पहले लिया रोटेट किया इस वेक्टर को दिस मैग्नीट्यूड इक्वल है इट कैन बी रिटन एज R e द आइटा थीटा इनटू आइटा फाइव. दिस मस्ट बी आइटा फाइव. Now R e the iota theta is equal to Z1 minus Z naught is equal to e the power iota phi. Now this term come over here denominator में I got it. This is the result. This is the result. ये कब result है if Z2 minus Z naught modulus is equal to Z1 minus Z naught. This is one result. अब जब ये दो लाइंस के बीच में हम एंगल बना रहे हैं एंड व्हेन देयर मैग्नीट्यूड्स आर नॉट इक्वल लाइक अब कोई भी दो लाइंस दे रखी है this is the argon plane I take it one lines
it comes out to be, this is suppose A, this is B, this is C. A पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कर रहा है Z1, दिस इज थीटा, दिस इज Z2, B पे ले लो Z2, C पे ले लो Z3. नाउ मेरे को एंगल थीटा निकालना है. व्हाट इज एंगल थीटा इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तो हम कैसे निकालेंगे? दैट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे इट इज, दिस इज ए बी, इट इज Z1 माइनस Z0, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z3 is equal to modulus of Z1 minus Z2 upon modulus of Z1 minus Z3 e the power iota theta. This is the rule. This is the rule to find, this is the rule, this is the rule to find angle between two lines in argand plane represented by complex number. Now this is the thing. अब एक बात का ध्यान रखना, आपको कई बार डायरेक्शन उल्टा दे रखा हो, Z3 माइनस Z2, मतलब इट कम्स आउट टू बी, इट इज, दिस इज, जस्ट ए मिनट, Z1 माइनस Z2, Z3 माइनस, नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा Z3 माइनस Z2, इट इज Z3 माइनस Z2. Make it one correction, it should be Z1 minus Z2 is equal to Z3 minus Z2 is equal to Z1 minus Z2 modulus upon Z3 minus Z2 modulus. पिछले केस में हमने लिया था इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल था, इस केस में इन दोनों लाइंस का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, तो विल डू इट लाइक दिस वे. ऑल्सो इफ, यदि ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज में जैसे दे रखा हो, इट इज Z3 माइनस Z2 upon Z1 minus Z2, this is equal to Z3 minus Z2 upon Z1 minus Z2 modulus, this is e the power minus iota theta. If ये इस डायरेक्शन में दे रखा हो, it comes out to be like this way, this is from, it goes from ये वाली साइड, it goes it in this direction, तो इस प्लेस में क्या आ जाएगा? it is negative direction, angle will be what? Angle will come out to be -1. So it should be like this way only. Now I can say, above result can be extended in case of triangle ABC. In case of triangle ABC, let complex number Z1, Z2, Z3 be represented by vertices A, B and C, of triangle तो लिखा ही हुआ है, of vertices ABC. Then पहले यहां से मैं क्या करता हूं, एक आर्गन प्लेन में I make one triangle, I take it A, again draw it, it looks like to be a right angle triangle. I draw it any triangle, this is, I take it, this is as A, this is B, this is C, this is, I take it alpha, this is, I take it beta, and this is, I take it gamma. This is A is Z1, B is Z2, C is Z3. I draw one triangle in argand plane. Now
Z3, ये वाला एंगल जैसे अल्फा निकालना है पहले, तो क्या आएगा Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1। कौन सी से कौन सी डायरेक्शन के, Z3 टू Z2, वी आर, इट कम्स आउट टू बी क्लॉकवाइज, एंगल इज कम्स आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज इक्वल टू Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 e दी पावर आइटा अल्फा। पॉइंट नंबर 2, अब बीटा एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, वी गो फॉर Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2 is equal to Z1 minus Z2. It is Z3 minus Z2. It is e the power iota beta. Then it comes out to be Z1. This third one is, suppose gamma निकालना है तो we go for it. It is Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3. This is Z2 minus Z3 modulus upon Z1 minus Z3 e the power iota gamma. So this is the way we calculate the angle between two lines. Or we can say alpha is equal to argument of Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1. Beta is equal to argument of Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. And gamma is equal to argument of Z2 minus Z3 upon Z1 minus Z3. This is the way we can find out the angle between two lines. Now, one of the results, especially in the case of equilateral angle, एक दो रिजल्ट्स होते हैं इक्विलेटरल एंगल के केस में, वो सारे के सारे हम क्या करेंगे, मैं आपको थोड़ा बताता हूं आए कैसे, लिखवाए मैंने पहले भी थे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज बेसिक थिंग है कि आपको सपोज एंगल कैलकुलेट करना पड़े तो यू शुड बी एबल टू कैलकुलेट इट। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, वैसे तो ये पॉइंट लिखवाया हुआ है, इफ Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral angle, if Z1 Z2 Z3 are vertices of an equilateral angle, then show Z1 square plus Z2 square plus Z3 square is equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z1 Z3। ये कैसे आया देखो, ये मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ की, this is ABC, I draw, suppose this is an equilateral angle, this is A Z1 B Z2 C Z3, A Z1 B Z2 C Z3, it is pi by 3, it is pi by 3 and it is pi by 3. We have been given the equilateral angle, तो सबसे पहले हम ये A वाला एंगल कर रहे हैं, इन इट कम्स आउट टू, अब पहले ये एंगल A वाला कर रहे हैं, इट कम्स आउट टू बी, वी नो, जो हमने पिछले क्वेश्चंस में हमने लगाया लॉ, एंगल बिटवीन टू लाइंस के बीच में, सो ए वाला एंगल है, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, इट इज Z3 माइनस Z1 अपॉन Z2 माइनस Z1 इज इक्वल टू Z3 minus Z1 modulus Z2 minus Z1 modulus is e the power iota pi by 3. This is the rule. Now we know that this is equilateral angle, all sides are equal, AB is equal to BC is equal to CA, so I can say Z3 minus Z1 upon Z2 minus Z1 is e the power iota pi by 3. Also
आल्सो अब ये वाला एंगल बी वाला निकाल लेते हैं. इट कम्स आउट टू बी z1 minus z2 upon z3 minus z2 is equal to e the power iota pi by 3. z1 minus z2 upon z3 minus z2. Now because magnitudes are equal, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते हैं. z2 minus z1 upon z3 from 1 and 2. I just see right hand side is equal, left hand side must be equal. z1 minus z2 upon z3 minus z2. Now it comes out to be cross multiply करेंगे z3 square minus z2 z3 minus z1 z3 plus z1 z2 is equal to, this is equal to z2 z1 z2 minus z2 square minus z1 square, it is plus z1 z2. Now we go for it, it is z1 z2 minus, it comes out to be this one. Now I just see कौन कौन सी टर्म्स आपस में कट रही हैं. z1 and z2 will be cancel out over here. We got it z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3. This is the result, we have to prove it. यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था. So we prove it like this way. So we should know it how to find the angle between two lines. Now I can say these important result. One of the important results, especially in case of equilateral triangle. That result is, if z1 comma z2 comma z3 are vertices of triangle ABC, and this triangle is equilateral if z1 square plus z2 square plus z3 square is equal to z1 z2 plus z2 z3 plus z1 z3, or z1 minus z2 the whole square, z1 minus z3 the whole square, z2 minus z3 the whole square is equal to 0, or 1 upon z1 minus z2, 1 upon z2 minus z3, 1 upon it is z3 minus z1. ये रिजल्ट, ये फर्स्ट रिजल्ट अभी हमने प्रूव किया. सेकंड रिजल्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और मेक द फैक्टर. वी गॉट इट दिस थिंग. ये चीज हमने क्वाड्रेटिक में मैंने प्रूव भी करके दिखाई हुई है. फिर थर्ड वाला पॉइंट आ जाओ, इनका एलसीएम लो. इनका एलसीएम लोगे तो यू गेट्स दिस थिंग, इट इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 z2 z3 z1 z3. सो ये तीनों के तीनों रिजल्ट
इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ये याद रखने हैं, इसको हम डायरेक्ट ही यूज करेंगे। नाउ basis of this theory I am coming to problems. Now सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 8 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 of our assignment. If Z1 comma Z2 comma Z3 represent vertices of an equilateral triangle are vertices of an equilateral triangle taken in order then A option is 1 upon Z1 minus Z2, 1 upon Z2 minus Z3, 1 upon Z3 minus Z1 is equal to 0. B option is 1 upon Z1 minus Z2 minus 1 upon Z2 minus Z3 minus 1 upon Z3 minus Z1 is equal to 0. C option is 1 upon Z1 minus Z0, Z1 minus Z2 is equal to 1 upon Z2 minus Z3. And D, it comes out to be none of these. Now I've just proved it. हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पहले ही हमने पॉइंट याद कर लिया है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे we got it Z1 square, Z2 square, Z3 square. This is Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z1 Z3, or we can say this is triangle will be equilateral, then this will be equal to 0. So डायरेक्ट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन है दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 yet. If Z1, Z2, Z3 are vertices of an equilateral triangle, of an isosceles triangle, right angle at Z2, right angle at Z2, then value of Z1 minus Z2 the whole square plus Z2 minus Z3 the whole square is A part minus 1, B 0, C Z1 minus Z3 the whole square, D it is none of these. नाउ इसको करना कैसे, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमें क्लियरली गिवन है कि ये ट्रायंगल क्या दे रखे आइसोलेसिस, हम वी ड्रॉ इट लाइक दिस वे, इट इज वी ड्रॉ इट लाइक दिस वे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ए बी पे Z2 दे रखा है, दिस एंगल हैज बीन गिवन एज 90 डिग्री। नाउ इट हैज बीन गिवन, इट इज ए, आई टेक इट Z1, सी पे ले लिया Z3। Now it comes out to be, यहां से मैं कंक्लूड क्या करूंगा, आई कैन से BA इज इक्वल टू BC,
BA is equal to BC and angle ABC is equal to, it is 90 degree. This has been given. Now BA dot BC से क्या मतलब आ जाएगा? It is Z1 minus Z2 modulus. BA is this one. This is equal to BC. I can say Z3 minus Z2 modulus. Now ये दो sides given है, मैं इनके बीच में angle निकालता हूँ. That is, it has been given as 90 degree. It is Z1. I can say this is argument of, ये angle 90 degree दे रखा है. Argument of this comes out to be Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2. This is equal to pi by 2. जो मैंने पॉइंट लिखवाया था आपको. आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस वन इज इक्वल टू पाई बाय 2. इसका मतलब क्या हो जाएगा? और Z1 minus Z2 upon Z3 minus Z2 is equal to, it is Z1 minus Z2 modulus Z3 minus Z2 modulus e the power iota pi by 2. Now I can say this is equal 1 आ जाएगा. यहां से मैं कंक्लूड करता हूं, कह सकता हूं Z1 minus Z2 is equal to Z3 minus Z2. This is 1 e the power iota by 2. That is equal to cos pi. It comes out to be what? It is cos pi by 2 plus iota sin by 2. It comes out to be iota only. Now it is Z1 minus Z2, and on squaring. On squaring I got it Z1 minus Z2 the whole square plus is equal to Z3 minus Z2 the whole square Z3 minus Z2 the whole square, it is iota square. This is Z1 minus Z2 the whole square plus Z3 minus Z2 the whole square is equal to 0. हमने वैल्यू इसी की निकालनी थी. Z1 minus Z2 plus Z2 minus Z1 होल स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो द राइट ऑप्शन इट कम्स आउट टू बी बी पार्ट 0. सो इसको करना कैसे हमने? सिंपल लॉजिक. BA is equal to BC we have been given. ABC is equal to 90 degree. I apply this angle between, I apply this one angle between these two lines. We have been given 90 degree. Z1 minus Z2 is equal to iota times Z3 minus Z2. On squaring we got it Z1 minus Z2 the whole square plus Z3 minus Z2 the whole square is equal to 0. So right option is B part. Now the next question is, I try to take it similar question. Question number next, I just take it. If roots of z cube plus iota z square plus 2 iota is equal to 0 represent vertices of triangle ABC, vertices of triangle ABC in argand plane
then area of triangle is, A 3 root 7 upon 2, B option is 3 root 7 upon 4, C 2, and D none. This has been given out. This cubic we have been given out. अब यार ध्यान से हम देखेंगे, इसमें कोई पॉइंट पुट कर देखेंगे, सो क्लियरली z इज इक्वल टू आइटा सेटिस्फाई इट, z इज इक्वल टू आइटा सेटिस्फाइड, z की जगह आइटा पुट करेंगे, आइटा क्यूब प्लस 2 आइटा माइनस आइटा प्लस 2 आइटा, इट इज इक्वल टू 0. सो हमारा एक रूट आ चुका है आइटा. हम बाकी लेट अदर रूट्स आर z1 and z2. Now I got it. Product sum of roots z1 plus z2 plus iota. Sum of roots is equal to minus of iota. This is equal to z1 plus z2 is equal to minus 2 iota. Then product of roots z1 z2 iota is equal to 2 iota. z1 z2 is equal to 2. z1 की जगह क्या वैल्यू निकालेंगे, इट इज माइनस 2 आइटा माइनस z2, इट इज z2 into, it comes out to be, I just reach it over here, z2 into minus 2 iota minus z2 is equal to 2. I can say z2 square plus 2 iota z2 plus 2 is equal to 0. z2 is equal to minus 2 iota plus 4 iota square, it is minus 4 plus 8 upon 2. It comes out to be, this comes out to be 2z square. This is 2 into z square upon 2 4. It is z square. This is equal to 2. This comes out to be z2 square. So यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, this is equal to 2. z2 is equal to, this is my plus minus iota plus 1. z2 is equal to एक वैल्यू z1, I can say it is minus iota minus 1. Now we have to find out the area. एरिया किसके इक्वल आएगा, एरिया, आई राइट डाउन एरिया. एरिया में अब हम क्या करेंगे, यहां पर पहला पॉइंट लेंगे, इट इज इक्वल टू हाफ. फर्स्ट पॉइंट है आइटा 0 1 1. सेकेंड पॉइंट लेंगे 1 माइनस 1 1. आई टेक इट माइनस 1 माइनस 1 1. इसको सॉल्व करते हैं, वी गॉट इट व्हाट 0. This comes out to be, on solving this thing, it is minus 2 modulus, which is equal to 2 square units. 2 square units. So the right option, it is C part.